अब ये तो आप नया ग्लोबल ऑर्डर है ना कि जिस देश के खिलाफ सैंक्शन होगा उससे आप नहीं खरीद सकते। और हम ये नहीं चाहते कि अगर उस सैंक्शन को हम तोड़ें, उसका उल्लंघन करें, तो क्या होगा? तो मान लो 50% टैरिफ लग जाएगा। तो हम कहीं के नहीं रहे ना। इधर से हमें डर है कि हमारा 18% का 43% हो जाएगा, 25% और अगर हम तेल खरीदेंगे। उधर हम कहते हैं कि हमारे पास 25 दिन का ही केवल क्रूड ऑयल स्टॉक है, 25 दिन का। तो 25 दिन तो बड़ा खतरनाक है, तो हमें खरीदना पड़ेगा। तो फिर हमें इजाजत लेनी पड़ेगी। तो इजाजत लेंगे तो हम आत्मनिर्भर कैसे हुए? ये भी तो सवाल उठता है ना। हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या रही है? हमने देखिए रिश्ते तो ईरान से तोड़ दिए, अब कोई रिश्ता तो रहा नहीं। किस किस्म का रिश्ता रहा? तो वहां अगर रिश्ते तोड़ दिए और रशिया से हम खरीद नहीं सकते, और जहां तक ईरान का सवाल है, उन्होंने कहा है कि जो चाइनीज फ्लैग शिप होंगे वही स्टेट ऑफ हॉर्मुज से चलेंगे, आने देंगे हम। तो अगर हमारे अच्छे रिश्ते रहते तो निश्चित रूप से हमें वहां से भी तेल मिलता। लेकिन सर सवाल ये उठता है कि जो इंडिया की एनर्जी नीड है, रेल हो, इंडस्ट्री हो, डोमेस्टिक हो, एलपीजी अभी एआई समिट हुई है, एआई डेवलपमेंट के लिए एनर्जी सबसे प्राइम रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल सही बात है। और यूएस कह रहा है कि ये लड़ाई कई हफ्ते तक जी चल हाँ, सकता जी है। हाँ, जी हाँ। तो फिर कैसे इंडिया अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर? अरे भैया, इन्होंने 11 साल क्या किया भाई? 2014 से लेकर आज तक ये क्या कर रहे थे? बैठे थे। इनको मालूम नहीं था कि ये जरूरतें होंगी। वाकई में हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर कहने से थोड़ी ना आत्मनिर्भर भारत होता है, कहने से थोड़ी ना कोई विकसित भारत हो जाता है। विकसित भारत तो तभी होगा जब भारत शिक्षित होगा। तो आप उस पर तवज्जो नहीं देते। तो आपकी ना कोई नीति है, ना कोई पॉलिसी है आपकी, ना कोई विदेश पॉलिसी है। अब मुझे तो समझ नहीं आया कि ये देश चल कैसे रहा है। भगवान भरोसे ही चल रहा है। सबके ऊपर तो हम मतलब कि कमाल की बात यह है कि ट्रंप साहब तय करते हैं कि सीज फायर हुआ, अनाउंस वो करते हैं। ट्रंप साहब अनाउंस करते हैं कि हमारा इंडो यूएस डील हो गया, ट्रेड डील हो गया। उसकी कॉन्टूअर्स क्या है वही अनाउंस करते हैं। तो कहां है भारत? कहां है प्रधानमंत्री जी? बोल क्यों नहीं रहा कोई? अरे भैया, हम ताकतवर देश हैं, विश्व हमें चाहता है क्योंकि हमारे पास 140 करोड़ लोग हैं। हमारे पास एक मजबूत मिडिल क्लास है। 250 मिलियन ही रही, लेकिन वो मिडिल क्लास 250 मिलियन लगभग यूरोप पॉपुलेशन के लगभग उतना ही है। तो वो तो यहाँ आएंगे, वो तो उनकी तो लाजमी आएंगे। चीन के साथ उनके रिश्ते नहीं हैं, तो उनको भारत की जरूरत है। तो ये हमें सोचना चाहिए था पिछले 11 साल 12 साल कि हम इसको अच्छी तरह से लेवरेज करें। दूसरा सर, आज आप राज्यसभा सांसद हैं, इंडिविजुअल कैपेसिटी पे गए। कांग्रेस की तरफ से खबर है कि पवन खेरा साहब और सलमान खुर्शीद साहब आ जाएंगे ईरान एम्बेसी। इमरान मसूद पहले आ चुके हैं, विक्रम मिस्त्री सरकार की तरफ से आए। अब भी क्या आप लोगों के सवाल खड़े हैं कि सरकार का स्टैंड जो है खासकर? नहीं, अभी मालूम है नहीं। हमें तो पता ही नहीं इनका स्टैंड क्या है, विदेश नीति पे क्या स्टैंड है इनका, हमें मालूम ही नहीं। और एआई की बात करते हैं, कॉन्फ्रेंस यहाँ करते हैं। हालत देखी थी, लोगों के पास वाईफाई नहीं था, एक एक 1.5 किलोमीटर चलना पड़ता था। मैं देखिए किस किस्म की आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। और उसके बाद इन्होंने इन्वेस्टमेंट एआई में क्या की है, इनसे पूछिए जरा। 1000 करोड़ 1000 करोड़ तो इस साल, और पिछले साल 2000 करोड़। उस 2000 में 40% खर्च हुआ। तो ये तो इनका लगाव है एआई से। मतलब कि ये तो आई करते हैं, एआई थोड़ी ना करते हैं।
This governor reshuffling has created a lot of controversy. Now the Tamil Nadu governor has been shifted to West Bengal. So I can't comment on these things. That's for the government to decide what to do, who to send. But the governors all behave in the same fashion in any case, wherever they are transferred and whenever they are transferred. The policy of the government is to disturb, through the governors, to disturb opposition-ruled states. Yes. The Iranian warship Iris Dena, what do you have to say on that? That's shocking, absolutely shocking. I mean, this was part of a Milan exercise, right? By the Indian Navy. Everybody was invited, including the US. At the last minute, US declined and say they came to us as our guests. And as you know, protocol requires that they don't have any ammunition when they come for these kind of exercises. So they had no ammunition, so they were defenseless. So one, they were our guests. Two, they were defenseless. Three, a US submarine sunk them. 80 people died. 61 are missing. I don't know. We don't know whether how many have died or not. Right? 33, 34 odd are injured. Right? And not a word from us. Not a word from us. The Congress leaders are also... Forget the Congress leaders. They are our guests, this country's guests, the Navy's guests. Not a word from the Navy. Not a word from the Prime Minister. Not a word from the External Affairs Minister. What kind of country are we living in? Why? Are they so afraid of the United States of America that they dare not utter a word? Is this our position today? And you want to sort of talk about Trump-Nirbhar Bharat? I mean, it's a Trump-Nirbhar Bharat. What's Atmanirbhar about it? Sir, today there was a tweet that was made by the United States Secretary of the Treasury, where in fact he mentioned about India's oil purchasing, and in fact they stated that they're issuing a temporary 30-day waiver to allow Indian refineries to purchase Russian oil. It's like a temporary government a permit granted to the transport in the transport sector to a bus that you can fly for 30 days. It's the same kind of thing, no? The questions are being raised why US is allowing India. I mean, who is US to allow India to purchase? Why? How can your journalists ask this question? You know by now what the US and India relationship is. I mean, how can they allow? Without them, we can't move a step. Otherwise, you know what will happen? 43% from 18 to 25 more. That will happen. Then we have very few choices in our external affairs policy. In our foreign policy, we have very few choices. We have very few, we cannot maneuver. We have, without saying anything, we have associated us with a particular alliance, with particular countries. And as you remember, अब की बार ट्रम्प सरकार की जो बात हो रही थी, you remember that, the bonhomie that was created. How do we ever trust what's going to happen in the future? We don't know what's going to happen in the future. We don't know how long this war is going to last. And if it lasts longer, see the impact of it. Impact of it, que our economy. Forget about anything else. Crude oil prices are almost $80 now, right? They may move up to 100 and 120. 85% of our imports of oil, we depend on 85% of import of oil. 20% of the global oil goes through the Hormuz Straits. And if you get it from somewhere else, the cost of it is much more because of transit cost and other things. Then that's not the only thing. Then LPG. All our import from LPG is from that area. From Qatar. Qatar has stopped its facility, shut down its facility. Where are we going to get the LPG from? At least Europe will get LPG from Russia, because there Trump doesn't mind. Where are we going to get it from? What about our fertilizers? What about our farmers?
Has this country, has this nation, and our dear Prime Minister ever realized what impact this will have if we start taking sides of this nature and in this fashion and are completely silent? I mean, I am a great admirer of the Prime Minister because he is so eloquent when it comes to domestic politics. So eloquent. When it's not necessary to speak, he speaks. But when it's necessary to speak, he doesn't speak. That's not fair to the country. Do you want to speak on the Congress Rajya Sabha list? No. Sir, the External Affairs Minister also did speak to the Iranian FM yesterday on call, and today he did. I'm so glad he did at last. At last he sent the Foreign Secretary here. Thank God. To the Iranian embassy at last. Thank you.